Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing very well. So this is the second part of this API workflow and first part में जहाँ पे मैंने इस वर्कफ्लो को एंड किया था, इस वीडियो में मैं वहीं से इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करूंगा, राइट। एंड गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। उससे आपको सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इस एपीआई वर्कफ्लो में क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे एक्टिविटीज को यूज करते हैं, व्हाट इज द use of HTTP request, script, assign, do while loop, if connector, and then response activity. अगर guys आपको फर्स्ट वीडियो कंप्लीट वॉच कर ले देन यू विल हैव ए क्लियर पिक्चर अबाउट द एपीआई वर्कफ्लो, हाउ इट्स वर्क एंड हाउ यू कैन यूज दिस एपीआई वर्कफ्लो इन योर प्रोजेक्ट। बट मैं फिर भी आपको एक हेड्स अप दे देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, मैंने यहाँ पे इफ एक एक्टिविटी का यूज किया जहाँ पे मैंने सिंपल यूजर से एक इनपुट लिया था। लेट्स से यूजर यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अभी मैंने 0 है, लेट्स से यहाँ पे यूजर 4 डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे। देन हियर वन कंडीशन विल चेक इफ दिस यूजर इनपुट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। If not, then it will go to the else part. If yes, then it will go to the do while loop, and in the loop it will iterate maximum. Here I have just added the condition. It means if counter value is equal to 5, it will break. Otherwise, it will go to the HTTP request and it will call that particular API to get that random name. And I'm just getting this name with this script activity here, and then I'm just assigning that name into this variable, the first name. And here I have just used this assign counter to increase value one by one, right? अभी का इसमें यहाँ पे सिंपल फर्स्ट नेम ही गेट कर रहा हूँ असाइन एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे मैं एक दो डिटेल्स और गेट करूंगा इस एपीआई के थ्रू। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आती है वहां से मेरे को एक दो डिटेल्स और गेट करनी है, लेट्स से दिस ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, राइट। इसके बाद जो भी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आएगी उसको मुझे अपने सेल्स फोर्स में इंसर्ट कराना है। अब दो ऑप्शन होते हैं सेल्स फोर्स में, आप या तो ऑटोमेशन के थ्रू करा सकते हो या फिर जो भी आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो एपीआई के थ्रू जो भी सेल्स फोर्स में डेटा इंसर्ट करा रहे हो वो अपने स्टूडियो में भी बना सकते हो, जो आपका यूआईपाथ स्टूडियो होता है। पर यहाँ पे हम लोग ये सेम काम अपने एपीआई वर्कफ्लो के थ्रू भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती है, ना ही कोई रोबोट की नीड होती है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपना सेल्स फोर्स का अकाउंट ओपन करके रखा है और आप लोग ये डमी अकाउंट बना सकते हो। 30 डेज का फ्री ट्रायल आपको यहाँ पे सेल्स फोर्स से मिल जाता है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस एपीआई वर्कफ्लो देन सेल्स फोर्स विल बी अ बेटर ऑप्शन, राइट। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। आप लोग कैसे करोगे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आप लोग उस वीडियो को देख के इस पूरे प्लेटफॉर्म को रेडी कर सकते हो यहाँ पे। अब लेट्स से मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स ऐड करने हैं। मैंने एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है अपने नेम से अंकित कुमार एंड देन अकाउंट नेम XYZ INC। आप लोग यहाँ पे डमी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, मैं यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करके मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर लेट से मेरे को 100 अकाउंट क्रिएट करने मेरे पास एक एक्सेल फाइल है यहाँ पे कंप्लीट डेटा है, वहां से मैं अगर वन बाय वन क्रिएट करूंगा देन इट विल टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग एपीआई वर्कफ्लो एंड विद द एपीआई वर्कफ्लो आई विल क्रिएट ऑल ऑफ द कॉन्टैक्ट्स हियर। सो सबसे पहले मैं एपीआई वर्कफ्लो पे आऊंगा। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या सारी वैल्यूज गेट करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट से कॉल किया, देन फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है। अभी के लिए आप सेल्स फोर्स पे आके चेक करोगे तो यहाँ पे मेरे को अकाउंट नेम भी चाहिए होता है, बट अकाउंट नेम ऑलरेडी होता है, वो मेरे को सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। जैसे लेट से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सेलेक्ट करूंगा एंड देन लेट से मैं कोई एक नेम ऐड कर दिया यहाँ पे एंड देन अकाउंट अगर मेरे पास है तो वो मेरे को सेलेक्ट करना होता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको एमपीडी भी छोड़ सकता हूँ अभी के लिए, राइट। मैं सिंपल जैसे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखना एक अकाउंट मेरे पास और क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। मैं सिंपल कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन अभी मेरे पास यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट्स हैं। अब अकाउंट नेम मैंडेटरी नहीं है तो मैंने अकाउंट नेम को यहाँ पे जस्ट अभी स्किप कर दिया, राइट। अकाउंट नेम भी आप यहाँ पे आके बाद में ऐड कर सकते हो, वो आप अपने एपीआई वर्कफ्लो के थ्रू भी कर सकते हो। पर अभी मेन है मेरा यहाँ पे कि एपीआई वर्कफ्लो के थ्रू एपीआई हिट करके मैं ये डिटेल्स यहाँ पे कैसे क्रिएट करूंगा। सिंपल, मैं एपीआई वर्कफ्लो पे जाऊंगा। लेट से मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम गेट कर लिया है सबसे पहले एंड यहाँ से मैं लास्ट नेम भी गेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक असाइन एक्टिविटी और ऐड करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूंगा लास्ट नेम। And first of all, I will change this activity name, assign last name. And in the to variable, I will select that particular variable last name. And in the insert variable, I will just type contacts dot outputs dot
एंड गाइस यहाँ पे मेरे को सिंपल अपने स्क्रिप्ट एक्टिविटी का एक आउटपुट सेलेक्ट करना होता, बट यहाँ पे मैं अभी मेरे पास कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं है लास्ट नेम के लिए। स्क्रिप्ट एक्टिविटी पे आप जाओगे, यहाँ पे मैंने सिंपल रिटर्न किया था फर्स्ट नेम को ओनली। अब अगर मेरे को लास्ट नेम भी यहाँ से रिटर्न करना है, देन मैं यहीं यहाँ पर भी एक्सप्रेशन को ऐड कर सकता हूँ, बट वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक न्यू एक्टिविटी को जस्ट कॉल करूंगा, राइट। मैं सिंपल यहाँ पे फिर से एक स्क्रिप्ट एक्टिविटी कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, स्क्रिप्ट फर्स्ट नेम। आपको अदरवाइज कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, राइट। स्क्रिप्ट लास्ट नेम, and in this last name. So first of all, I will just copy that previous expression, and here I will just paste same expression, and instead of first name, I will just type here last. And here I will just change this name JavaScript underscore last name, right. And in this assign last name activity, here I will just use that particular variable outputs dot JavaScript last name. Okay. When I will run this workflow, then you will see proper result value here. And now I'm just going to debug this workflow, but before debugging, I'll check this user input value. As of now, it's 5. And now I'm just clicking on this debug button, and then it will debug, or it will, run 5 times here, right? So if you see this new value, the last name value and the first name value, you can check it from here. In the first name value at the the fifth iteration, and the last name value here. Okay, now I'm getting first name and last name from this HTTP request activity, from that API. And now I'll go to this Salesforce and I'll click on this new. So here, if you see, here we have two required items. First is title. Here we have to select this Mr. MRS Doctor, right? And the last name. And the first name is not required, but yeah, we will enter the first name as well. So as of now, I'm just getting first name and last name, but yeah, I have to get this title from that API also. So if I go to this script last name, and if I open this expression editor, then here you will see this is a title is already added with first name and last name in every iteration. So I will get this title as well. Then I will add one more script activity here. Script title, right. And in this script title, I will just type the same expression, but instead of last, here I will just select title. Okay, and here JavaScript underscore title. I will change this output name as well. Right. And here I will use one more assign activity. And here I will create one more variable title. And I'll change this activity name, and here to variable, I'll select that name title, and in this set value, I'll open this expression, and here I'll type contact dot output dot JavaScript dot title. And now I'll debug this workflow, and then we will see if this value is getting or not. So the workflow is completed, and in the assigned title, we can check this value, the MRS for the fifth iteration, and the fourth iteration value was missed. Now I'm getting all the three values which is required to create contacts in Salesforce. Now I will add Salesforce activity here. So for using that activity, here I have to use this connector, right? And in the connector, I will just search Salesforce. Now here we have this activity, create contact, create a new contact in Salesforce. So I will click on this activity.
When I click, then this activity is searching Salesforce connection here. If the connection is already created or not in my orchestrator, right? But as of now, I have already created the connection with Salesforce. And now if you see in the create contact activity, we have this last name. This is a required. And here we have to select this account ID, but it's not required here. But if you have, then you can select this one, right? So why we need to use account ID here? If I go to the Salesforce and I click on this new, and if I just select here Mr. and just type some dummy entries here, then here we have this account name. So it means whatever contact you are adding in Salesforce, that should be related with any account. So that account you have to select it from here. So let's say XYZ or ABC INC. So anyone you have to select it from here. So this is account name that we have to, give in this account ID. It means we have to provide that account ID here. Or if you have not any account, then just go to accounts and you can create some accounts from here, right? But as of now, I will not use any account. Okay, and rest of the details are not mandatory here or are not required. Then you can just skip that. First of all, I will provide that last name, and in the last name, I'll select that variable. That will be a last name, and the first name, the first name. And for the title, here we have not any options to provide the title. But if you see here, we have one option, manage properties. I will just click here. And here you can just select that particular property, whichever you want to use that. So at the end, here we have this option. I will select this and update field. And if I scroll down, then here we have this option. I will use that variable values. So I'll click this title. And now all set with this activity, create contact. And now I'll debug this workflow, and this activity should run 5 times, and then 5 new contacts should be created here, right? I'll click on this debug button. If any error will occur, then we will see. Okay, so this workflow is completed. And now if you click on this create contact activity output, then this drop down will open, and here you can check that output. In the content, the first name and ID. So this ID will be a unique for every contact, and the last name and the title here, right? And at the fourth iteration, the first name was different and ID was different. Everything was different. Okay, now if I just check these all of the contacts value in Salesforce, and if I refresh this page, then here you will see all of the contacts values, right? First two I already created, and the third one, fourth, fifth, sixth, and seventh. Right. So all of the details you can check it from here. If I click any contact, then you will see the title here, MR. And if I go back for this one, the miss. Right. If you check this name and all of the details, so it should be a same. So I think it will be a fourth iteration. You can check the same name, same last name, and the title here. Right. So almost within 7 to 8 seconds, I just created almost 5 contacts here. If you have multiple contacts that you have to create in Salesforce, then you can use this API workflow. So instead of this API workflow, if you go with the UiPath Studio or any web automation, UI automation in Salesforce, then it will take a lots of time, right? And Selector will not be reliable. So you will face more difficulties here. So this is a just short example. You can use get record, insert record, search record, get contacts, right? And update contact share, get leads, get the opportunities, create opportunities, add file records. But you can use any activity here.
If you have any questions related with this video, related with my previous videos, then you can ask your questions in the comment box, and I'll try to provide the proper answer, right? And guys, if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. And thank you so much guys for watching this video. Bye.